Net Operating Income Approach Part 1. This is 208th module of Financial Management course. In this module, now we are shifting our discussion from the traditional theory or the relevance theory to what is called the irrelevance theory. The irrelevance theory is not just net operating income approach, but there are other theories. This is one which is a representative irrelevance theory of capital structure, and we'll discuss the other popular argument which is called the M&M argument in the other modules. Now, this theory is strictly the opposite of traditional theory. For example, the traditional theory says that the capital structure has a direct impact on the value of a firm. So net operating income approach states that no, capital structure is not affecting the value of firm. Capital structure का value of firm के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. So that means that overall cost of capital does not change with the change in the capital structure. यानी बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल थ्योरी ने जो दो बातें कही हैं वो ये हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू में कम होती है और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जहां मिनिमम है वहां ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है. लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि जब हम फाइनेंशियल लेवरेज को बढ़ाते हैं तो उसके बढ़ाने से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आती. क्यों कोई तब्दीली नहीं आती? द आंसर इज that whenever a firm increases its leverage and changes its capital structure, the investors or the shareholders, knowing the impact of the change in the capital structure, change or increase their required rate of return. And they exactly increase their required rate of return to the extent that the overall weighted average cost of capital remains the same. यानी ट्रेडिशनल थ्योरी और इस इररेलेवेंस थ्योरी में फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहती है कि लेवरेज के बढ़ने से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है, एनओआई अप्रोच भी यही कहती है, लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि शुरू में शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम बढ़ता है और बाद में जाके ज़्यादा बढ़ता है. और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि नहीं, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस प्रोपोर्शन से बढ़ता है लेवरेज के बढ़ने से कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आती. So if the overall cost of capital does not change, so there is no optimal capital structure, or in other words, every capital structure is an optimal capital structure. That means that instead of trying to alter the capital structures, alter the leverage, and trying to increase the value of a firm, the management should try to do something else to increase the value of the firm. And in net operating income approach, जब कैपिटल स्ट्रक्चर के इफेक्ट को, उसके इम्पैक्ट को वैल्यू पर नेगेट करती है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर वैल्यू ऑफ फर्म किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से तब्दील होती है. The argument is simply that it is the income which increases the value of a firm. And so, if the firm wants to increase its value, it has to increase its earnings or its profit. So, we conclude by saying that net operating income approach is a total contrast to the traditional theory, and this approach says that there does not exist any optimal capital structure. यानी हमारे शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनली लेवरेज के हिसाब से अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को एडजस्ट करते रहते हैं, और हर लेवल ऑफ लेवरेज के ऊपर, हर लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई तब्दीली नहीं आती.
किस चीज से तब्दीली आ सकती है? NOI states that it is the earning. To increase the value, we need to increase the earnings of the business.